ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. ओके, suppose taken two vector a and b that makes an angle theta with each other. B can be resolved, ठीक, along the direction of the a b cos theta and perpendicular b sin theta. The product of the a and b cos theta that called dot product or scalar product. तो a dot b equal to ab cos theta. Theta angle between two vector a, magnitude of the vector a, b, magnitude of the vector b, और theta angle between the two vector. Cos theta equal to a dot b by ab. What are the application of the dot product? What are the application of the dot product? To find the angle between two vector. If vector A given I cap, J cap, B cap. Okay? Then to find the angle between the two vector, that formula use. If magnitude of the vector A given, magnitude of the vector B given, and resultant of the two vector given, then find the angle between the two vector. That formula use, R equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. Root over R given, resultant vector given, magnitude of vector A given, B given, to find the angle. But if vector A in the term of I, J, K, vector B in the term of the I, J, K, B, I, J, K, then find the angle between the two vector. Then this formula will be used. ठीक है? What are the property of the characteristics of the dot product? First, if theta equal to 0, cos 0 1, dot product A dot B equal to AB. That is our vector or that is our scalar. If A magnitude of the A and B will be equal, then what happen? A vector A, B place B की जगह क्या लिखेंगे? A, that is the what vector, that is the what scalar. A into A क्या होगा? A square. Same logic. I dot I, तो I कैप क्या है? यूनिट वेक्टर. मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 1. ये हुआ स्केलर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 1. J डॉट J 1, दैट वेक्टर, और ये स्केलर 1 into 1 1. K डॉट K 1. ठीक. A डॉट B equal to B dot A. तो दिस ओबे द व्हाट? कम्यूटेटिव लॉ. इफ थीटा इक्वल टू 180, A डॉट B इक्वल टू क्या होगा? माइनस AB, क्योंकि cos 180 माइनस 1. क्लियर? सेकंड, थर्ड, if theta equal to 90 degree, cos 90 0, cos 90 0. तो A dot B equal to AB cos 90 0. A dot B equal to 0. क्लियर? अब सपोज इन स्पेस ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंट अलोंग द एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप एंड जेड एक्सिस के कैप. अब cos 90 0, that is called orthogonal vector because I j, j k, k I, both यानी all are three mutually perpendicular to each other. That is called orthogonal vector. याद है? तो I dot j एंगल 90, यानी I j
आई जे मैग्नीट्यूड 1 cos 90 जे डॉट आई या जे डॉट के 90 0 के डॉट आई 90 क्लियर ओके नंबर 4 suppose vector a are given in term a1 I cap a2 j cap a3 k cap b vector b b1 I cap b2 j cap and b3 k cap अब यहां पे फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर और नथिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ ओनली बोल दिया कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर अब सपोज a1 की जगह एनी मैग्नीट्यूड गिवन 2 3 4 एंड सो तो अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट cos थीटा इक्वल टू a डॉट b बाई ab ठीक तो फर्स्ट टू फाइंड a डॉट b then magnitude of the A, then magnitude of the B, and put the value in this formula to find the angle between two vectors. So just example, A dot B equal to what? तो A क्या हुआ? A1 I का, A2 J का, A3 K का, dot B